आज आमे देखिबा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर रे आमे देखितले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज आमे देखिबा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज हमर एजेंडा रे कोन कोन रहइबो? आज हमर एजेंडा रे रहिबो सम बेसिक कांसेप्ट्स, रिव्यूइंग कांसेप्ट्स, किछटा प्रॉब्लम आमे देखिबा एवं किछटा पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स मध्ये आप देखियो। So first जिनसो होची इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हमर थाय sin, cos, tan, that doesn't have any inverse because they are not one and odd. The thing is, our basic trigonometric functions are not one and odd. Like if I draw sine graph, suppose like this, sine is like this. This is not onto because the range is only -1 to +1. This is -1, this is +1. So these are not onto functions. And from the knowledge of functions, we know that for a inverse to be exist, the function must be one and onto. तो हमें कौन कर परिबा? तो we can restrict our domain and range to make this function bijective. Bijective कौन one and onto bijective कहे? हमें फंक्शन रे डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर परिबा। केमिति एग्जांपल डिफरेंट कलर चूज करछि। सपोज sin फंक्शन रे डोमेन को हमें सेट कर देले -π/2 टू π/2। जदि हमें sin फंक्शन रे डोमेन को -π/2 टू π/2 सेट कर देले तो तहा -1 टू 1 भितरे बाइजेक्टिव हबो जदि रेंज हमें -1 टू 1 सेट करी। ठीक है, ट्रिकी हे जाय पारे। अथरे कहबी जदि सिंपली जदि मो पाखरे गोटे sin फंक्शन अछि एंड मु ताको -π/2 टू π/2 सेट कर देली लाइक दिस। दिस इज आवर डोमेन। आवर रेंज को आवर रेंज होची -1 टू +1। So in this range and in this domain, this is a bijective function. This is 1 1 and this is onto. एबे हमें इनवर्स डिफाइन कर परियो sin फंक्शन काई हमें ताको 1 1 और onto करि पारि। इनवर्स केमिति हमें डिफाइन करिवा? sin इनवर्स x तारो आसीबो जो नोटेशन टा एमति लिखा जो sin इनवर्स x domain -1 to 1, range can be anything. This is called the principal value branch. Mainly हमें प्रिंसिपल वैल्यू डिनोट करता है जैसे हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स डिनोट करता हूं। मेनली हमें प्रिंसिपल वैल्यू डिनोट करता है। नेक्स्ट हमें देखिबा डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ सम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मेनली हम फोकस रहबो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऊपर, डोमेन्स एवं रेंज ऊपर। जेमति सिंपल sin इनवर्स x रो डोमेन -1 to 1, cos इनवर्स x -1 to 1। व्हाई? sin x रो रेंज होची -1 to 1, cos x रो रेंज होची -1 to 1। दैट्स व्हाई sin इनवर्स x रो डोमेन -1 to 1 एवं cos इनवर्स x रो डोमेन होची -1 to 1। रेंज sin इनवर्स x रो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होची -π/2 टू π/2। cos इनवर्स x रो प्रिंसिपल ब्रांच होची 0 to π। एति की मन रखिया पई पडियो, ए टेबल टी हमको मन रखिया पई पडियो। cosec इनवर्स x रो डोमेन होची r -1 to 1। obviously sin in 1 upon sin x is cosec x। so -1 टू छोटो किबा 1 टू बड़ वैल्यू इज आसी परियो cosec in x पई। तो डोमेन r -1 रेंज कोन -π/2 टू π/2 सेम एज sin x, बट 0 is not in the range। cosec इनवर्स x रे हमें 0 पाइबा नहीं because cosec 0 is undefined। cosec 0 is undefined because sin 0 is 0। से पे cosec इनवर्स x रेंज रे 0 नहीं। सिमिलरली sec इनवर्स रे π/2 नहीं काहे कि ना cos x होची π/2, cos x π/2 से पे cosec इनवर्स x रे मध्य π/2 नहीं। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, tan इनवर्स x रे π/2 और -π/2 क्लोज्ड नो काहे कि ना tan π/2 इज इंफिनिटी मींस
tending to infinity not defined. এবং cot x रे मध्य 0 pi include नंदी कहीं cot 0 is undefined and cot pi मध्य undefined. तो simply हम reason होची as we know कि sin 0 is equal to 0. So cosec 0 is undefined. That's why cosec inverse x doesn't have 0 in its principal range. Similarly for cos, similarly for tan and cot. Simply. Then we can move to the next slide. In the previous lecture in trigonometric function, ମୁଁ ग्राफ को बहुत इंपोर्टेंस देती थी एवं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रे मध्ये ମୁଁ ग्राफ को बहुत इंपोर्टेंस देबी एवं आगो का मैं ग्राफ को क्वेश्चन मध्ये सॉल्व करी हमें ग्राफ विजुअलाइज करता है sin x सिंपल ऑसिलेटिंग फंक्शन -1 to 1 मध्ये रे ऑसिलेट हुए एवं 2 पाई होची यार पीरियड sin इनवर्स x जदि हमें देखिबा को जिबा गोटे इनवर्स फंक्शन ग्राफ टी y equal to x लाइन टा टिके ये होला y equal to x जो लाइन अच्छी this line a line रो mirror image we can see sin x is going like this, sin inverse x is going like this. So जे कौन सी इनवर्स फंक्शन ग्राफ y equal to x corresponding रे इमेज होता है. It is a very important point कि inverse functions graph is image with respect to y equal to x. This is very important and we have to remember this. हमें cos x रो ग्राफ मध्ये देख परियो cos x रो ग्राफ होची एमिति cos inverse x रो ग्राफ एमिति बोर्ड पोर्शन जेटा हेची बोर्ड होची प्रिंसिपल रेंज वैल्यू एमिति एटा 0 to pi एवं एठी -pi/2 to +pi/2. These are board things and these are the principal range values. Next cosec x एवं sec x रो मध्ये हम सेमिति ग्राफ देखि परियो cosec x पई cosec x रो नॉर्मल ग्राफ होची एमिति एवं cosec inverse x रे ग्राफ टी जस्ट एई भय आइते. We can see also जदि हमें x equal to y equal to x रो ग्राफ नबा एवं ता हिसाब रे इमेज नबा तो we will get this type of graph. This is exercise for you. आपको एक्सरसाइज भाबे ट्राई कर परियो किंतु एतिकी मन रखिले बहुत सुविधा एग्जाम पय जे ग्राफ टी केमिति देखा जाय. मु तुमको पूरा ग्राफ मन रखिया पय कहूनी किंतु ग्राफ टी केमिति देखा जाय क्वेश्चन सॉल्व करिया पय दरकार पड़ी पारे विजुअलाइजेशन. Similarly for sec x and sec inverse x. Similarly tan x tan inverse x. Tan x is like this, tan inverse x is like this. हमें देखि परिबा कि जते pi/2 को जाउची tan जते बे इंफिनिटी और को जाउची तार रेंज pi/2 को टेंड करूची किंतु tan inverse x रेंज रे pi/2 केबे आसीबो नै काहे कि ना tan pi/2 केबे वैल्यू किछ टेंड कर नै. Similarly for cot inverse x. एबे these are some most important results. ए रिजल्ट्स को मन रखिया पय पड़ियो मन रखिले एग्जाम रे डिराइव करिया पय बहुत टाइम लगता है. किछटा सिंपल रिजल्ट्स अछि जेमति कि sin inverse 1/x is equal to cosec inverse x. आइडिया केमिति आसुची हम पाखरे जो आइडिया टा थिला आइडिया होची cosec x कोन थिला cosec x is equal to 1/sin x. तो सही भाई हम आइडिया नहीं परियो कि sin of 1/x is equal to cosec inverse x. रेंज जो देची x रो से रेंज ऊपर डिपेंड करे कि केमिति कोन वैल्यू आसीबो हमको जे रेंज और डोमेन जहां हमको दिया हितला प्रीवियस टेबल रे ता अनुसार वैल्यू सेट हो. सिमिलरली cos inverse 1/x is equal to sec inverse x tan inverse 1/x is equal to cot inverse x. Why this is greater than 0? जदि greater than 0 नथियो जदि नेगेटिव अछि so this is a very important point. What is मु आपको ब्लर करूची. You can see कि tan inverse 1/x
if x is negative, problem कौन सा है? We can see in the graph. When we are in the graph, I will remove these annotations. Cot inverse x रो principal value होची 0 to pi, but tan inverse x रो principal value होची minus pi by 2 to plus pi by 2. ଯେତେବେଳେ negative value ଆସେ ସେତେବେଳେ tan inverse x is negative, but for negative values cot inverse x is positive. So हमको कौन करिया ପାଇଁ पड़िबो? Just add a padding. Padding केमती add करिया? Padding हमें एमती add करि परिबा कि we can add a minus pi. जदि हमें गोटे minus pi add करि minus pi by 2 नुहे minus pi जदि हमें add करिबा तो हमें tan inverse x रो range को पहुंची परिबा, because tan inverse x रो range ही सेमती हमें नहीं principal value, we always try to get to the principal value, तो हमें सही होया करिबा. The next thing we'll do is see some other formulas, like sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x, tan inverse minus is equal to minus tan inverse x, cosec inverse minus is equal to minus cosec. काहे कि होची ना आकर प्रिंसिपल रेंज जेटा सेटा minus pi by 2 to plus pi by 2, किंतु cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. Why? काहे ना cos inverse रेंज होची 0 to pi होची minus pi by 2 to plus pi by 2. तो से पे हमें माइनस करिलो वैल्यू नेगेटिव हे जाय, ताको हमें पैडिंग करिया पई पाई ऐड करथिले, जब सिमिलरली हमें पछ वैल्यू रे हमें देखले जे पाई सब्ट्रैक्ट करथिले. सिमिलरली आपकी रिजल्ट sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2. very important results माने रखिया पई पड़ियो. एवं next, the most important formula, the sole most important formula is this one, tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y. Question कौन आसे? Different type of questions, like series. We will see two series solving, and another type of question that can come is transformation to sine and cos. This type of question can come only in the basis of these two formulas. The very important is this series solving. There is some given function value and we have to break it somehow. हमें ताको एभया ब्रेक करिया पई पड़िबो, जेमिति कि x plus y divided by 1 minus xy किबा x minus y divided by 1 plus xy फॉर्मुला परिबो. एभया जदि हमें ब्रेक कर परिबा तो ताहाले हमें एमती क्वेश्चन सॉल्व कर परिबा. सिमिलर क्वेश्चंस लाइक हम पाखर आवरी फॉर्मुला किछटा बेसी इंपोर्टेंट नोहा से फॉर्मुला, तथापि if you can see that हमें ताको मने रखले बहुत सुविधा है परिबो. लाइक 2 tan inverse x minus sin inverse 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Similarly हमें गोटे जेमती फॉर्मुला थिला tan cos 2 theta रो गोटे 2 tan x रो फॉर्मुला थिला, sin 2 theta रो फॉर्मुला थिला, tan 2 theta रो फॉर्मुला था. Similarly these formulas गुडा को मने रखिले एग्जाम रे डिराइव करिया पे सुविधा, किंतु मने रखिबा not necessary, but you can remember this formula. So the main thing is we have to remember this one, and for the other part these two formulas are very important, and for the other part we have to remember these things sin inverse minus x, tan inverse minus x, cosec inverse minus x, cos inverse minus x, sec inverse minus x. एती फॉर्मूला तो हम माने किंतु क्वेश्चन किंदे काटो हमें अबे किछटा क्वेश्चन कर चलियो कंटीन्यूअसली, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस JEE-Main रे आछि, एवं वी विल गो इन द लेवल इजी टू मीडियम
too hard. There are no hard questions. If I say basic hard question nahi, every question is easy if you internalize the concepts. Concept जदि ठीक से बुझी परिवा, question बहुत सहज रे करिए. But बहुत simple questions. बहुत simple question. Tan inverse this plus sec inverse this. First idea कौन आसुची ना, हमें कौन कर परिवा. The first thing is इंडिया को छोटो कर देबी एवं can we use some kind of that series like sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 and similar. आमे ताको यूज कर परिवा या ताठो भी किसी सहज अछि. The first thing is आमा पाखरे जत्ते बे sec inverse एते complex term दिए. We can try to simplify that. आमे देखियो जे केमिति आमे simplify करछे. We can try to simplify the term. That's why it is a very easy question. We'll see how to simplify. 8 plus 4 root 3 divided by 6 plus 3 root 3. The first thing in any problem in inverse trigonometric function, and also normal functions. Jodi toy irrational number अछि, first thing we do is rationalization. Limits also जते हमें limits देखिबा किबा किछि भी रे irrationalization को हमें rationalize करिवा सब. तो ऊपर 6 minus 3 root 3 multiply करला परे हमें देखिबा कि बहुत सिंपल टर्म आसी होची 4 by 3. This term is equal to this term, and we also don't need any rationalization. Just observe, this thing is 4 into 2 plus 2 root 3. Sorry, 4 into 2 plus root 3. And the lower thing is 3 into 2 plus root 3. 3 into 2 plus root 3. So A is short, so this is easily cancelable. So this term is nothing difficult, I can see. So एबे हम पाखरे कौन रहला tan inverse 1 plus root 3 by 3 plus root 3. Sec inverse under root of 4 by 3 because under root 3. This is 1 by root 3. We can take common root 3, then see that if we take common root 3 from here, it will come 1 plus root 3. So tan inverse 1 by root 3 plus sec inverse 2 by root 3. Tan inverse 1 by root 3 is 5 by 6. Why? Simple question means as if tan of pi by 6 is 1 by root 3, then tan inverse 1 by root 3 is pi by 6. As simple as that. So if we can do that, and also sec inverse 2 by root 3. As per our formula, cos inverse 1 by x is equal to sec inverse x. हमें देखी थी previous time. Abang this is in the range 0 to pi by 2. So no need to worry. Cos inverse 3 by 2. Similarly, pi by 6 plus pi by 6 equal to pi by 3. So options जदि थिबो previous question में देखियो हाँ pi by 3 is there in the option. Very easy question to score marks in exam. So this is a very simple question, but the first thing I give the most priority to any inverse trigonometric functional equation is the domains and ranges. There can be questions from only from domains part. So किछिटा भी function दे दिया जिवो किछिटा भी function दे दिया जिवो हमको domain कहबार छै r domain केते r domain के. So पचरा है जे if the domain of the function this is some alpha beta 2 and union gamma delta then some values. तो हमको कुछ ना हमको simply domain find करियर है. Function पर sec inverse 2x upon 5x plus 3. So this is a rational function. A rational function रे बहुत किछि function आसे कि 5x plus 3 0 हे परिबोनी काई 0 हेले denominator not positive. So हमें सही सब केस को handle करियो. First thing is the domain of sec inverse x. This is a very simple thing. The domain of sec inverse x is
this एटा हमें यूज करियो तो हम पाखरे रहिला 2x upon 5/3 रो mod is greater than equal to 5/3 obviously dita केस आसीबो गोटे this if we solve this we will get four cases how if we have 2x divided by 5x plus 3 is less than equal to -1 तो हमें कहि दवा कि सिंपली हमें सपोर्ट को नहीं गले we have 7x plus 3 is less than equal to 0 this is wrong why multiplication with negative number can change the sign of inequality can सब multiplication with a negative number change the sign of inequality this is a very important thing to remember so direct एया लिखि देले भूल हो so हमको कौन करिया को पड़ियो we have to do is simply we have cases like 7x plus 3 जते less than equal to 0 हबो सतबे डिनोमिनेटर जे 5x plus 3 हम डिनोमिनेटर सतबे ग्रेटर देन 0 हबो काहे कि हम इनइक्वालिटी साइंस चेंज हो नै किंतु जतबे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जतबे एटा नेगेटिव हबो सतबे इनइक्वालिटी साइन चेंज हबो सिंपल जिंस सिंपल कोन हला कि जतबे हमें पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते दीपटे इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहउची जतबे नेगेटिव चेंज करते इनइक्वालिटी साइन चेंज होउची सिमिलरली फॉर दिस केस 5x plus 3 जते नेगेटिव रहइबो इनइक्वालिटी साइन एटा x plus एपटुका c चेंज हे जिवो एवं जते पॉजिटिव रहइबो इनइक्वालिटी साइन सेम रहइबो एबे हम पाखरे चारटा केस अछि हम सॉल्व कर परिया इजीली so if we solve it first case रो हमें सॉल्व करके पहले x is less than -3/7 x is greater than -3/5 second case रो हमें पहले कि x is greater than तो this is impossible why this is impossible because obviously गोटे नंबर x is कोची x is greater than 1 and x is less than -1 that is not possible so this case is impossible case 3 हमें पहले कि x is greater than -1 greater than equal to -1 this is possible and this is also the same case impossible तो हम डोमेन हमें पहले -1 रु बड़ा थिबा दरकार -3/5 रु छोटे थिबा दरकार किंतु -3/5 रु जदी बड़ा जाउची तो -3/7 अपर बाउंड this is our lower bound this is our upper bound and -3/5 कोन आसला मो फर्स्ट क्वेश्चन रे जेबे कहितली फर्स्ट थिंग रे कि we have this जतबे डिनोमिनेटर 5x plus 6 तबे किछरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आसे जतबे सेटा 0 हुए तो सिमिलरली हमको सेही टाइप रे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एठी मिल छी -3/5 रे -3/5 is not in the domain so हम डोमेन कोन आसीला सिंपल तापर हमें अल्फा बीटा फाइंड कर परिबा देबो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होला तो एठिकार कांसेप्ट हमें कोन कोन लर्न कर एंड जा आगो की इंपोर्टेंट हो कांसेप्ट्स लर्न use simple domain range to compute domains of composition functions जतबे बहुत किछि फंक्शन में कंपोजिशन थिबो हमें सिंपल डोमेन रेंज कांसेप्ट को नेकी यूज करके हमें तार डोमेन और रेंज बाहर कर परियो these two questions are easy questions these questions are easy questions एबे हमें देखिबा किछटा हार्ड क्वेश्चन मींस मीडियम the first question जेमति मु कहितली the very important application of graph question बताची for x belongs to this the number of solution of equation sin inverse x equal question रे किछि जणा पडुनी why graph question ने graph त नाही graph काहे की यूज हो कि हमें तो सॉल्व करिवा sin inverse x is equal to this अछि तो हमें कोन कर परिवा कि हमें बहुत किछि लाइक
बोथ साइड रे sin मल्टीप्लाई कर दबा sin of sin inverse x is equal to sin of 2 tan inverse x. And what we can also do is then we can write the formula of 2 tan inverse x is equal to tan inverse x plus tan inverse x is equal to tan inverse 2x divided by 1 minus x square. Then we can also derive sin inverse from here. Tan inverse 2x by 1 minus x square का मैं sin inverse से change करिवा. Both side रे equation आसी हो ताकि equate करिवा. एमिति समस्त करिए. But आमे सिखिले ग्राफ. आमे यूज करिवा ग्राफ. How to use graph? Equation based solving exercise for you. You can take as exercise for you. We can draw the graph. आमे sin inverse x ग्राफ जाचे. First जिंसो number of solutions पचराई छे question. आमको पचराई छी number of solution. Number of solution केमि फाइंड करिवा? दुई जन को ग्राफ बनेवा इंटरसेक्शन पॉइंट जति के आसबे सेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन. sin इनवर्स x रो ग्राफ हमें देखि. sin x रो ग्राफ होची एमिति. तो sin इनवर्स x रो ग्राफ आसीबो एग्जैक्ट मिरर इमेज एमिति. So हमें sin inverse x graph is this one. This is graph of sin inverse x. 2 tan inverse x. Tan inverse x जतबे 1 रे थिबो tan inverse. तो सतबे pi by 4 जीवा होता. Tan inverse 1 is pi by 4. 2 tan inverse x. तो तमे tan inverse x ग्राफ को 2 रे स्केल कर देता है. So the graph का एमिति चले. Tan inverse x graph is something like this. This एमिति चलता है. तो आमे ताकू एमिति स्केल कर दे परिवा एवं स्केल कला परे हम पाखरे कोन आसला. हम पाखरे आसला कि the point of intersection are this. आगु को और इंटरसेक्शन करिए बट हमको दरकार -1 1 भीतर. केमिति जानिली सिंपल जिंस. tan इनवर्स x रो ग्राफ होची एमिति. sin इनवर्स x रो ग्राफ होची एमिति. गोटे ग्राफ होची कॉनकेव ग्राफ माने जेमति एमिति थाए. गोटे हला कॉन्वेक्स. मझी पॉइंट रे केबे से माने इंटरसेक्ट करिवे नहीं अनलेस दे टू मीट समवेयर लाइक हियर. से माने जे जे गोटे पॉइंट रे मीट करना दी से माने केबे मीट हेबे. तो हमको तीनटा पॉइंट मिल गला इंटरसेक्शन. बट हमको क्वेश्चन कोइची -1 इज ओपन. तो -1 रे हमको इंटरसेक्शन दरकार. तो हमको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलला? गोटे दुईटा. हमको दुईटा इंटरसेक्शन पॉइंट मिले. जदि हम इक्वेशन सॉल्व करिया को जाइताते इक्वेशन सॉल्व करिया परे हमको एटलीस्ट 10-15 लाइन सॉल्यूशन लिखिया पई पड़थांता. ता भीतर भूल हवार चांस अछि प्लस माइनस टिके एपट सेपट हे गेले डोमेन रेंज रो सॉल्यूशन भूल आस परे. किंतु ग्राफ जदि मेथड हम यूज करियो ग्राफ मेथड रो केबे सॉल्यूशन भूल आसीबो. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन ग्राफ मेथड्स. So हमें आगो देख परिवा कि सिंपल above graph is the intersection point, domain is this number of solution. So what is our takeaway from this question? एक क्वेश्चन हमें सीख ले कि graphs are very important. This is माने बहुत सिंपल कथा हुआ अलग कुछ कहीं कुछ किंतु this is a very important thing I am telling in every question. Every question. In whole mathematics course, limit, differentiability, continuity, integration ro graph ro use of areas, simple functions, sometimes integration. Graph is very important. Graph master हम करिया है करी. तो simple जितनी भी graph, जितनी भी function हम करू छे, at least समस्या पर graph बनेगा आपको दिख रहा है. Graph ना बनेले question solve हो. सब question बिना graph रे solve हो. किंतु बहुत easily solve हो questions, बहुत easily. तो ग्राफ को हम इंपोर्टेंस दो. नेक्स्ट हमें और किसी क्वेश्चन देखियो आरे सीरीज मु कहितली सीरीज आसीबो tan इनवर्स x रो सीरीज आसी. क्वेश्चन कोन कोची a = a1 = 1 a2 a3 a4 भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. माने सिंपल कहिया को चाहू जे a1 1 a2 2 a3 3 a4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कंसेक्यूटिव नेचुरल.
तो हमको पता चला कि tan इनवर्स 1/1 plus a1 a2 plus tan inverse 1 plus 1/1 plus a2 a3 is equal। तो हमको कौन कहिथिले जहाँ टर्म थिबो ताको चेंज करिया पय पड़िबो आइदर x minus y by 1 plus xy रे नहले x plus y by 1 minus xy रे जनरली हमको चेंज करिया पय पड़े this means obviously when we are solving a series if we have things like a minus b plus b minus c plus c minus d तो हमको इजी होगा ना इजी केम हबो हमको इजी हबो आपको कैंसिल करनी आपको कैंसिल आपको कैंसिल आपको कैंसिल आपको कैंसिल तो हम पाखे रहला ओनली ए लाइन सो ऑलवेज वी ट्राई टू जहां भी हमको गिवन देथिबो जहां भी गिवन देथिबो ऑलवेज जहां भी गिवन देथिबो ट्राई टू डू लाइक समथिंग लाइक x minus y divided by 1 plus xy always try to do this तो एठी बहुत क्लियर कट हमको देखा होची कोन दिया होची बहुत क्लियर कट भाव देखा होची जेमति कि सिंपलिटी के ऑब्जर्वेशन करले हमको देखा जीवो जे 1 divided by 1 plus axy सब a1 a2 a3 a3 में xy ले देली हमको कहे जे सब गुडा कंसेक्यूटिव नंबर हमको कहे जे सब नंबर होची कंसेक्यूटिव नंबर तो हमें 1 को लिख परबे ay minus x a2 a1 भीतर डिफरेंस 1 थिबो कंसेक्यूटिव नंबर एवं तळटा जेमिति छै हमें सेमति लिख देबा तो हम पाखरे जो सीरीज अछि ता कोन हेला tan इनवर्स ay minus x upon 1 plus ax into ay ताको सॉल्व करले tan इनवर्स ay minus tan inverse x तो आवर सीरीज कोन हेला हम सीरीज कोन हेला tan इनवर्स a2 minus tan inverse a1 plus tan inverse a3 minus tan inverse a2 plus tan inverse a4 minus a3 so कटिला कोन एठी tan inverse a2 एठी tan inverse a2 कटिबो एठी a3 पुनी एठी a3 आसीबो सेठी कटिबो तो फाइनल हमें केते जानिबा tan इनवर्स a 2022 minus तो एटा भी कटिबो हम पाखरे फाइनली कोन रहिला फाइनली हम पाखरे रहिला tan इनवर्स a 2022 minus a1 2022 this हमें भी यूज कर परिबा tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus y upon 1 plus xy this is our answer this is not important thing कौन थिला हम पाखरे important थिला कि हमें यूज कर परियो हमें सीरीज को सब कन्वर्ट करिया पे चेष्टा करिवा इन सम फॉर्म ऑफ x minus y divided by 1 plus x हमें आगो को आउरी गोटे एग्जांपल देखियो हाउ टू कन्वर्ट सीरीज इनटू दिस if any difficulties you can probably ask later in the chat box I think and ebe tapai hame next question देखियो this is a conceptual question मैं लिखी छी conceptual किंतु एते भी conceptual में we have to simply solve the equation use the facts you learned in trigonometry normal trigonometry use the question basic concept question पढ़ी लागिवो and some set define कराई छी set किछि बेसी कष्ट नै सेट कोन कहू छी जे x is a real number obviously हम रियल नंबर ट्रिगोनोमेट्री रियल नंबर ही चलिबो अछि कॉम्प्लेक्स नंबर किछटा अछि कि दाबे कॉम्प्लेक्स नंबर पढिबानी 2 tan inverse 1 minus x by 1 plus x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x and number of element हमको एटार भी सिंपली सॉल्यूशन दे तो एठी जने कहबो जदी मो एठी भी ग्राफ यूज करी बहुत कष्ट ग्राफ यूज करिया बहुत कष्ट 1 minus x upon 1 plus x 1 minus x square by 1 plus x square तो ग्राफ सब जगह यूजफुल नुहे किंतु किछि एठी हमको इक्वेशन सॉल्व करिया पे पड़िबो एवं हम इजीली सॉल्व कर परिबा इक्वेशन केमदी सॉल्व करिया देखियो द मेन स्टेप जो कहली जे टिके कांसेप्चुअल कोन कांसेप्चुअल जे हमें जदी एठी 2 tan inverse कंप्यूट करिया पे जीबा 2 tan inverse x is tan inverse x plus tan inverse x तो कंप्यूट करिया को गले हे जीवो क्वेश्चन सॉल्व हे जो आराम से कंप्यूट हे जो किंतु कष्ट तो एठी हमें सिंपली किछटा फैक्ट यूज करबा जेटा हम प्लेन ट्रिगोनोमेट्री रे सिखि वी कैन रिप्लेस x equal to tan theta आईडिया केउठी आसला आईडिया कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट 1 minus x square by 1 plus x
हमको हमें पढ़ाई थला जे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एई फैक्ट हमको जाना छै तो हमें जदी cos इनवर्स सूत्र cos नहीं आसीबा और tan इनवर्स सूत्र tan नहीं आसीबा तो हमको हम पाखरे सिंपली एंगल हे जीवो एंगल काहे हे जीवो कि हमर डोमेन भी दिया है 0 टू पाई बाय 2 रे तो वैल्यूज तो बाहर को जीवनी तो सिंपली हम पाखरे cos इनवर्स सम cos y tan इनवर्स सम tan y तो हमें तब सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर जदी म x इक्वल टू tan थीटा नेली मो पाखरे कोन आसीबो 1 minus x divided by 1 plus x is equal to कौन 1 minus tan theta by 1 plus tan theta 1 को हम लिखि परिबे tan pi by 4 tan x minus y कौन थला tan x minus tan y divided by 1 plus tan x into tan y so 1 minus tan theta by 1 plus tan theta is equal to tan pi by 4 minus theta this is easy and जेउठो हमको आइडिया आस्थला सिंपल आइडिया जो आस्थला हमको 1 minus x square by 1 plus x square is equal to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square. तो 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta is cos 2 theta. तो सिंपल कथा कोन हला tan inverse भितरे हमको मिलेगा tan cos inverse भितरे हमको मिलेगा cos बहुत सिंपल है 2 tan inverse tan pi by 4 minus theta is equal to cos inverse cos 2 theta. क्वेश्चन रे कोइ जे सब वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 भितर अछि तो cos 2 थीटा भी 0 टू पाई जहा कि cos रो डोमेन भितर अछि एवं 0 टू पाई बाय 2 हलेटा माइनस पाई बाय 4 टू केते भी जीवो पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4 तो सेटा भी डोमेन भितर रहला सब किछि डोमेन भितर अछि तो सीधा सीधा में लिख जीवा 2 tan इनवर्स तो ताको 2 कर देला डायरेक्ट पाई बाय 4 माइनस थीटा इनटू 2 एठी 2 इनटू दिस ये कटिया pi by 2 minus 2 theta. Simply cos inverse cos भी कटियाला 2 theta. We have equation pi by 2 minus 2 theta equal to 2 theta. Easily solve है जो equation theta equal to pi by 8. Theta equal to pi by 8 जब आसी जीवो तापरे हम x कोन हेतले tan theta. तो हम x कोन आसीबो एठी हम पाखरे x आसीबो tan pi by 8. tan pi by 8 जदी मैं कैलकुलेट कर परिया मने रखिया प्रेफर करबी root 2 minus 1 tan pi by 8 you can easily calculate tan pi by 8 I can easily write it as tan pi by 4 is equal to tan pi by 8 plus pi by 8 so 2x divided by 1 minus x square is equal to 1 equation solve करिया बोले हमको आस जीवो x square plus 2x minus 1 is equal to 0 सॉल्व करले हमें पाई जीवा गोटे रूट आसीबो रूट 2 माइनस 1 गोटे आसीबो आ गोटे आसीबो माइनस रूट 2 माइनस 1 तो माइनस रूट 2 माइनस 1 बाहर आ जीवो काहे tan x pi by 8 रे ऑब्वियसली 1 टू छोटा हो तो रूट 2 माइनस 1 द सॉल्यूशन तो सेटा हमको पाई गेले तो हमें कोन पाले रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.41 रूट 2 इज 1.41 so this is 0.4 question हमको कौन पचारथला that this is our set if ns denote the number of element ns equal to 0 0 तो नुहे जदि हमें सॉल्यूशन पाई न थांदे ताले 0 तक बोलते ns equal to 1 and the element in s is more than 1 by 2 नुहे 0.41 आछि less than 1 by 2 and only one ns equal to 1 and only one element is less than 1 by 2 ns equal to 1 and the element options टिके ओडवा मोडवा लागिला मते काई ambiguity अछि obviously ns equal to 1 तो only one element कोन तो both of these options are correct JEE-Main रो टिके options सब ओडवा मोडवा था सेटर के असुविधा नै किंतु we know how to solve the basic concept the main concept here is we have to see this 1 minus x square by 1 plus x square एटा को देखला हमको ट्रिगोनोमेट्री स्ट्राइक करिवो दिमाग रे की जतबे हमें 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta करतला सेटा cos 2 theta होतला तो cos inverse cos 2 theta करतला हमको इजी हिजबो एवं सिंपली 1 minus tan theta by तो दिस इज आवर कांसेप्ट एटा यूज करी हम एक क्वेश्चन सॉल्व सिंपल क्वेश्चन सिंपल तो नय किंतु बुझी हले हिजबो सिंपल टिके मीडियम टू हार्ड मी कहितले टिके लास्ट आडू क्वेश्चन करेबी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टिके इन्वॉल्विंग टॉपिक हे था दिस क्वेश्चन बहुत लेंथी देखा होची seems lengthy मु क्वेश्चन और नाम देछि for
K belongs to R, let the solution of the equation cos of sin inverse of x cot of tan inverse of cos of sin inverse, cos sin inverse x cot tan inverse cos sin inverse, 6টি trigonometric 1 2 3 4 5 6টি is equal to K be alpha and beta r a solution माने एते बडर सॉल्यूशन होची अल्फा बीटा पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ओनली टेक प्रिंसिपल वैल्यूज किछि मेंशन न करथने भी प्रिंसिपल वैल्यूज सबले नि आजिबो if the solution of the equation these are this then b by k seems lengthy but another advice for me in the examinations are some lengthy questions are the easiest ones. This is a very good thing to remember. I will think some lengthy questions are like easiest one. Why will see. हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिया फर्स्ट ब्रैकेट भितर कोन अछि फर्स्ट भीतर ब्रैकेट cos of sin inverse x cos of sin inverse x मोस्ट जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस चेंज कला बे गोटे ट्रायंगल ड्रा करी की रेशियोस देखिबा प्रिफर माने करी कि sin inverse x केमति होबो माने एंगल टा किछि गोटे एमति थिबा sin x = x sin this = x हेतिबो तो एई वैल्यू पई cos केते होबो अब कैलकुलेट कर देले साइड टा दिस इज हाइपोटेन्यूस टा लंब तो 1 - x² तो cos ऑफ दिस एंगल हे जिवो 1 - x² अलगा वे रे भी करी होबो किंतु ऑब्वियसली दिस इज ट्रायंगल ड्रा करी की करिया सबटी इजीएस्ट हेता जी sin इनवर्स x अछि तो दिस एंगल पई sin वैल्यू इज x तो 1 - x² तो आम पाखरे दिस वैल्यू का एटा कैलकुलेट हे गेला आम पाखरे हम पाखरे एटा कैलकुलेट होला एबे हमें कैलकुलेट करिया जे tan इनवर्स एटा कोन हेता एबे हम कैलकुलेट करिया tan इनवर्स एटा कोन हेता केमति करिया हमको कैलकुलेट करे अछि पूरा हमें पूरा करिया cot of tan इनवर्स दिस सिंपल कोने ट्रायंगल जेउ थीटा पई एटा तो सिंपली cot of tan इनवर्स 1/x भी हमें देखि परिबा जेउ थीटा पई tan x 1 - x² अंडर रूट हेतिबो cot पई एटा 1/x तो एटा भी कैलकुलेट हे गला देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमको कोन कहै छी cos of sin inverse को हम पाखरे कोन बंचला cos sin inverse x एत्ति के हमें कैलकुलेट करि सच्चे केतटा ब्रैकेट दुइटा एत्ति के हमें कैलकुलेट करि सच्चे हम पाखरे एत्ति के रहि सो केमिति करिवा को कैलकुलेट सही सिंपल हम ट्रायंगल cos of sin inverse x upon 1 - x² sin x एमटी एंगल पई sin होची x by 1 - x² अंडर तो cos कोन हो एटा हमें कैलकुलेट करिया पाइथागोरस थ्योरम रे 1 - 2x² अंडर तो cos हे जिवो अंडर रूट ऑफ 1 - 2x² डिवाइडेड बाय 1 - x²। तो हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व कला परे हम इक्वेशन ती मात्र आसला एतिकी 1 - 2x² by 1 - x² अंडर एबे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करलिया केमिति कर बेसी कष्ट हबनी आगो क्वेश्चन टा भी बहुत इजी अछि एटा बोले लुची होची some lengthy questions are the easiest आमा पाखर जे इक्वेशन थिला एते बटे सिंपलीफाई हला पर आम पाखरे बंचिला 1 - 2x² अंडर रूट by 1 - x² अंडर रूट इज इक्वल टू k बोथ साइड रे स्क्वायर कर देली k in k² into 1 - x² कर दिया सॉल्व कर देला को एपट सपट नहीं की सॉल्व है x² इज इक्वल टू हम हमको कहसे ए इक्वेशन में दुईटा सॉल्यूशन अछि अल्फा और बीटा y x² इक्वल टू 25 द सॉल्यूशन कोन -5 तो जहां भी सॉल्यूशन थिबो गोटे आउटर नेगेटिव हितबा दिरा वैल्यू सेम हेतबो तो हमको अल्फा स्क्वायर जणा अछि अल्फा स्क्वायर इज x² k² बीटा स्क्वायर भी सेम अल्फा बाय बीटा के ऑब्वियसली मैं कहली जण का आउटर नेगेटिव हितु का x² गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव हम पाखर जे वैल्यू एटा मोशन एमिति मु डायरेक्ट लिखि देली डायरेक्ट लिखवा कथा नहे क्वेश्चन रे हमको पचरा आइछि जे हमको क्वेश्चन रे कोन कहै छी हमको क्वेश्चन रे कहै छी ना कि हमको क्वेश्चन रे कहै छी कि जहां भी अल्फा बीटा वैल्यू आसिला
हमको इक्वेशन दीची एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 तार दुईटा रूट होचंती 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर अल्फा बाय बीटा तो आम पाखरे सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देले दीटा चेंज होता है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आम यूज करबा सम ऑफ रूट्स इज b प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -5 दुईटा यूज कर देले हमें सॉल्व कर देबा k पई भी सॉल्व कर परिबा b पई भी सॉल्व कर परिबा तो हम पाखरे कोन रहला सम ऑफ रूट्स इज b सम ऑफ रूट कोन 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर 1 बाय अल्फा स्क्वायर कोन k स्क्वायर बाय 2 बाय k स्क्वायर माइनस 1 1 बाय बीटा स्क्वायर ठीक है 2 into k स्क्वायर माइनस 2 बाय k स्क्वायर प्लस अल्फा बाय बीटा के माइनस तो से पे माइनस 1 मो डायरेक्ट तो सम ऑफ रूट्स से हो दिस आपको सॉल्व कर देला हम पकड़े आज जो b इज इक्वल टू दिस तापरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गोटे रूट होची हमर एया 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर आ गोटे रूट -1 दीटा ने मल्टीप्लाई करले हम पकड़े से -5 माइनस माइनस काटी देबी 5 मल्टीप्लाई करले 5k स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 4 एपटो गला k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सॉरी k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 3 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 k स्क्वायर 1 बाय 3 k स्क्वायर को मैं एटी पुट करी 1 by 3 minus 3 1 by 3 minus 3 कहते 1 by 3 minus 3 आसो minus 8 by 3 एवं ता तळटारे 1 by 3 minus 1 is minus 2 by 3 तो minus 2 by 3 minus 8 by 3 को डिवाइड कर ले obviously 3 3 कट जीवो तो 4 तो b is equal to 4 pi है b by k स्क्वायर हमको क्वेश्चन में पता थी b by k स्क्वायर b 4 k स्क्वायर 1 by 3 b by k स्क्वायर क्वेश्चन फिनिश डिफिकल्टी कौन सा इट्स डिफिकल्ट मतलब फर्स्ट थिंग इज तुम्हें ट्राई करियो क्वेश्चन एते बड़ा देखि कि जे छोटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है जी एते बड़ा क्वेश्चन दिखाई सेमिति है ना सिंपली गोट द स्टेप सॉल्व करियो इनसाइड ब्रैकेट रो शब्द सॉल्व करियो स्टार्ट इनसाइड ब्रैकेट रो सॉल्व करियो ले सिंपल सॉल्व करियो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज करेगा तो the first actually गोटे जिनसे हम सीखले some lengthiest question or some easiest one last टाइम अछि हम पाखरे तो टाइम थिले मु कहितली गोटे बोनस क्वेश्चन करेबी एवं अगेन सीरीज इज वेरी इंपोर्टेंट इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गोटे क्वेश्चन जे कोन से सेशन रे गोटे क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट करि परियो सीरीज कोन कुछ समेशन ऑफ tan इनवर्स 1 by 2 is equal to b मु कहिथिली कि हम पाखरे वैल्यू जहां भी थिबो ताको चेंज करिया पे समथिंग x y डिवाइडेड बाय 1 plus x y रे चेंज करिया पे करथे 1 by 2r स्क्वायर को चेंज करियो पडियो हम पाखरे अछि सिंपल 1 by 2r into r ताम मुंडर कोन अछि 2r स्क्वायर 1 2r स्क्वायर तो r स्क्वायर किछि नाही तो तोय हमको कोन दरकार 1 दरकार फर्स्ट स्टेप तोय 1 दरकार तो मु कहबे तोय मु 1 ऐड कर देबी 1 plus 2r into r काहे लिखि जाना r स्क्वायर अगर r into r काहे लिखि दिस सो 2r स्क्वायर minus 1 तो a स्क्वायर minus b स्क्वायर फार्मूला होगा जाना कुछ ना a square minus b square फॉर्मूला होगा तो 2r square minus 1 को लिख ले मैं लिख पर भी √2r minus 1 into √2r plus 1 किंतु हम पाखरे ऊपर 1 अछि √2r minus 1 √2r plus 1 यदि मैं आपको किछि भी चेंज करबी मो पाखरे यदि किछि भी वैल्यू अछि a square minus 1 फॉर्म हम ताको चेंज करबी यदि a plus 1 into a minus 1 को ऊपर का वैल्यू जो आसीबो मु जदी एटा ऊपर जेमति म कहि x y करी ता वैल्यू म पाखरे 2 आसीबो किंतु मो पाखरे ऊपर 1 अछि ता हमें सिखिले कोन ऊपर हमको 2 आनिया पे ता हमें कोन करिवा ना चेंज 1 by 2r स्क्वायर को मु लिखि परिबी 2 by 4r के नॉन ट्रिवियल किंतु लिखि हबो
1 by 2r square को मैं लिखि परिबी 2 by 4r square एबे मु सॉल्व करिबी 2 by 4r square 4r into r ये सेम जिंसो 1 plus 4r into r minus 1 मो पाखरे a square minus 1 मु ताको लिखिबी a plus 1 into a minus 1 a square कोन 4r square a मु कोन पाइली 2r तो ऊपर हम जते देखिबी a plus ऊपर मते कोन देते x minus आइबो a plus 1 minus a into 2 काय 2r plus 1 2r minus 2 मो पाखरे अछि क्वेश्चन सॉल्व हे हम पाखरे सीरीज एबे तैयार हे गला सीरीज हमें बन केमती बने देले सिंपल फर्स्ट हमें कोन देखले 1 by 2r square को हमें 2 by 4r square 2 काहे की करले ता मोटिवेशन मो पसो क्वेश्चन में कहली 2 काहे कर 1 by 2r square को हमें 2 by 4r square करले 4r square को मु 1 plus 4r square minus 1 लिखिबी तापरे 2 by ताकू 2r plus 1 2r minus 1 लिखि देली तापरे 2 को मु लिख पारिबे 2r plus 1 minus 2r minus 1 तो हम पाखरे कोन हेला tan inverse 1 by 2r square is equal to tan inverse 2r plus 1 minus 2r minus 1 divided by 1 plus this tan inverse x minus y by 1 plus xy is equal to tan inverse x tan inverse 2r plus 1 minus tan inverse y tan inverse 2r minus 1 सीरीज हम पकड़ अछि tan inverse 1 by 2 square सीरीज हे गला चेंज सीरीज कोन हेला सीरीज हे गला tan inverse 2r plus 1 minus tan inverse 2r minus 1 रो लिखिबा टिके लिखिले जणा पड़जो फर्स्ट दुई तीनटा टर्म सब सीरीज रो लिखिले सीरीज केमति चासी जणा पड़जो tan inverse 3 minus tan inverse 1 plus tan inverse 5 minus tan inverse 3 plus dot dot tan inverse 100 तमे देखिबा रे एथि कटुची tan inverse 3 tan inverse 3 कटिबो tan inverse 5 संगरे पुनी tan inverse 5 कटिबो tan inverse 99 संगरे पछ थरे जे हम लिखथिबा tan inverse 99 minus tan inverse 97 सेटा कटिबो ताम पाख रहिला पर tan inverse 1 tan inverse 101 minus tan inverse 1 tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse x minus y by 1 plus xy tan inverse 100 by 100 100 by 100 टा होची 50 भाई हमको 50 थिला क्वेश्चन रे हमको क्वेश्चन रे कोन 50 हमको क्वेश्चन रे 50 थिला कि जहां भी वैल्यू आला ताको क्लैरिटी करी के 50 रे 51 असला ताम पर वैल्यू तो आज हम कोन सिखिबे सिंपल जिंस हला आज हम चार पांच टा जिंस देखले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रे जेटा कि प्राय सब क्वेश्चन सॉल्व हे जो फर्स्ट कथा ग्राफ्स ग्राफ्स सब भले से देखिबार अछि sin इनवर्स x एमिति चलिबो cos इनवर्स एमिति खाली केमिति चलिबो मने रख देले आपे आपे परीक्षा रे ड्रॉ हे जे tan इनवर्स x cos इनवर्स tan इनवर्स के मैं यूज करले जे एमिति चलिबो सब से पैसडा इंटरसेक्ट करिवोनी काई sin इनवर्स एमिति चलिबो tan इनवर्स एमिति चलिबो किछरा रिजल्ट जेमति कि +1 -1 एथि म जेमति कहल जे पाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करिया को पड़ियो पाई रे मल्टीपल सब ताकू डोमेन रेंज भीतर पैडिंग करिया पई cot इनवर्स -x = pi - cot इनवर्स x तापरे ए तीनटी फार्मूला सिंपल दिस टू फार्मूला वेरी इंपोर्टेंट सीरीज रे यूज हुए तापरे किछटा प्रॉब्लम्स हमें देखिले दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम एटार हमें देखिले डोमेन केमति सिंपलीफाई करियबो एटार हमें देखिले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन केमिति हमें देखि परिबा ग्राफ मु एक्सरसाइज दीची एक्सरसाइज करि परिबे कि इक्वेशन सॉल्विंग करी केमति करियो किंतु नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी इजी जदी सिंपल फंक्शन दीची sin इनवर्स x tan इनवर्स तो ग्राफ यूज करिबा इज वेरी इजी तापरे दिस इज अ सिंपल सीरीज हमें देखले केमति काटी परियो एठी हमें देखले कि एठी हमें ग्राफ यूज करि परियो भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन ने ग्राफ यूज करियो बने काहे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन दीची 1 - x² by 1 + x² 1 - x/1 + x कॉम्प्लेक्स फंक्शन तेठी हमें सिंपल सॉल्व करिया पय टिक्का आईडिया देखले जे 1 - x² by 1 + x² जे tan थीटा देखिबा तापरे दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल हमें भीतर आडे सॉल्व करी गले एंड द लास्ट क्वेश्चन हमें देखले कि किछि टाइम रे हमको ऊपर किछि मल्टीप्लाई डिवाइड करी कि किछटा मैनिपुलेशन करी कि सब बे ताको
tan inverse x minus tan inverse y solve करना। तो आज का लेक्चर रे आमे एती जिनसे सिखले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रे आउरी मु कहबे मोर थिंग जाकी प्रैक्टिस ପାଇଁ ଦରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ if you want to practice some questions then practice some questions on series like some series summations, these things we have to practice, and a number of solutions and some domains। এই তিনটা ইয়ের সব क्वेश्चन আসিবো only three main topics যাହା ବି ମୁଁ ଉପରେ କହିଲି three main topics ଯାହା କି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ତିନଟାର main question ଆସେ number series summation, number of solution, domains या range ଉପରେ ଯାହା ବି ଆଉ କିଛିଟା solving ଉପରେ ବି ଆସିପାରେ କି solving addition, simple solving and transformation like sin inverse को cos inverse करिवा, cos inverse को tan inverse। तो एई तीन चारटी मेन टॉपिक रो ही क्वेश्चन आता है सब बार। तो एती क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, मेनली सीरीज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इजी। आज ही पाई एती। थैंक्स।